Sister, if the sex education you're giving is within the purview of the Quran and Sunnah, it is perfectly fine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाजरीन, दुनिया भर में हम जिन परस्ती आम है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में इस बात को मना किया गया है। इसी वजह से कफार को मुसलमानों से सख्त चिढ़ है। एक काफिर लड़की ने यही क्वेश्चन किया डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो चलिए देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं वीडियो कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का जवाब उसको किस तरीके से दिया। I would love to ask your opinion in sex education, where it is quite a little bit sensitive in our country, as well for the student. So in your opinion, doctor, if the subject had been held, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? And also what is the duty of a Muslim as a professional, as a student? Sister, can you speak a bit slowly and loudly? Can you repeat the question slowly and loudly? Even the microphone, I cannot hear your voice clearly. Okay. Can you hold the microphone close to your mic, to your mouth, please? Okay. Hello? Yes, that's better. Okay. Okay. So my question is about your opinion in sex education, where it is quite sensitive in our country. So in your opinion, doctor, if the subject had been healed, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? And also what is the duty of a Muslim as a professional, as a student? That's my question. Thank you, doctor. The sisters asked the question that if there is sex education, then what is duty as a Muslim should be allowed, and duty as a student that should we undergo that sex education. Sister, if the sex education you're giving is within the purview of the Quran and Sunnah, it is perfectly fine. But if it is outside the purview of Quran and Sunnah, it is prohibited. Now let me explain to you my answer. That sex education, I'm a medical doctor. Sex education is a vast terminology. While giving sex education, if you break the haya, the modesty level, and break any rule of Quran and Sunnah, it is prohibited. For example, as a medical doctor, I would say that, okay, I will tell to the gents, don't have sexual intercourse during menstruation, sex education, no problem. But if I break the haya and try and show a model of a woman in front of a gent, it is not permitted. So as long as you do not break any ruling of the Quran and Sunnah and then impart the education, no problem. But if you break any rule of the Quran and Sunnah, it is prohibited for a teacher to teach, it is prohibited for a student to learn. Hope that answers the question. It's a generic answer. So sex education is a vast terminology. But if you're talking about sex education of the Western country, most of it is haram. I'm a medical doctor. And it doesn't benefit, it causes more loss to the student than benefit. So as long as the education doesn't break any rules of the Quran and Sunnah, it is permitted. But what we learn in the Western education of sex education, most of it against the teaching of Quran and Sunnah, the way it is taught. Hope that answers the question. Thank you. जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? आज की वीडियो आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर जाकिर नाइक आज की वीडियो में हम जिन्स परस्ती के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से उस औरत ने क्वेश्चन किया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया कि हम जिन्स परस्ती जो है वो गलत बात है और मुसलमान ममालिक में ये गुनाह है और मना किया गया है मुसलमान ममालिक में हम जिन परस्ती से। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बाहर के ममालिक में ज़्यादा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम जिन्स परस्ती सही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम जिन्स परस्ती होती तो मैं और आप ना होते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया और बहुत मुतमईन किया। तो जी हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।